डियर स्टूडेंट्स, आज दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। अ बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, एन इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। Which group of asset, which group of account is credit when it decreased? यार एसेट और एक्सपेंस जब डिक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं। What will be the effect on accounting equation if cash is invested by the owner? Increase cash, increase equity. Which group of account is debit when it increased? Oh, asset or expenses. Which one of the following is not feature of sole proprietorship? Easy formation, easy dish on them separate legal entity नहीं है इसका feature। लें जी students, next if the debit side of ledger is greater than the balance is debit balance. Next, at the end of accounting period a list of all ledger is prepared is called trial balance। ठीक है जी। First out the value of liability factor of accounting equation. Debtors and owner equity are इतने, debtors and owner equity is इतने, and we find out the liability factor। ठीक है, liability निकालनी है, डन हो गया। If cash and debtors are इतने, if cash rupees 1 lakh और उसके अलावा जी ये इतना हो गया, तो डेट कैश और डेटर दोनों ऐड हो जाएंगे, एसेट्स बन जाएंगे। इसमें से इक्विटी 1000 की माइनस हो जाएगी, 1,10,000 आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी। ऑल द वोचर आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इन जर्नल लेजर, नहीं इन जर्नल। Which of the following is or are the example of intangible? Copyright, goodwill, patent सारे ही हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें था कि रिसीट्स एंड कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट्स करते हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड अ लिस्ट ऑफ लेजर इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, वो कहते हैं जी कैश इतना है, डेटर इतने हैं, फर्नीचर इतना है, एंड अदर एसेट्स इतने हैं, ओनर इक्विटी, व्हाट आर द लायबिलिटी? यार इनको ऐड करो ना, लाख, 1,10,000, 2 लाख, 2,01,000, 90,000 माइनस करो यार, दो एक में से, तो पीछे 1,11,000 बच जाएगा। लो जी, यार लाइबिलिटी निकल है, कितना सौखा क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अ रॉन्ग एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक लीड्स टू कैश बुक शोइंग लेस बैलेंस। रॉन्ग डेबिट विल शो, अब भाई बहुत बैलेंस है, बहुत ज्यादा बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट, a wrong the cost of goods sold cost of goods sold account will fall under which of the following classification? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है एक्सपेंस होता है, सीधी सी बात है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिट, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट विल बी एक्सपेंस, डेबिट। डिक्रीज इन रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड, ये होता है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ डैश इज टू ascertain the result of business during the period फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ब्ला 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 ब्ला। चलो जी, नेक्स्ट। तो ये आप देखते जाओ यार, बड़े फायदे की चीज है। फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, जर्नल, सबसे पहले जर्नल में लिखते हैं। ठीक हो गया, बड़े काम की चीज है, इसको कोशिश करो कि अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करो यार, इतना जबरदस्त क्वेश्चन बैंक यू विल नेवर फाइंड एनीवेयर। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 by the owner will be effect on which of the following cash and capital? लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट, ब्ला 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 ब्ला। लें जी, दो हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।